Hello everybody and welcome in here. Now we will discuss about microscope. So what is microscope? Basically microscope is a laboratory instrument and it is used to examine objects that are too small to be seen by naked eye. Why we use microscope? To examine the cell division, RNA replication and size of the bacteria, right? So microscope, it is a laboratory instrument that is used to examine object that are too small to be seen by naked eye. So why we use microscope? To examine cell division, RNA replication, and size of bacteria. So the use of microscope is called microscopy. मीन्स कि जो माइक्रोस्कोप का जो यूज़ किया जाता है उस प्रोसेस को हम माइक्रोस्कोपी कहते हैं. The use of microscope is called microscopy. So scientist Zecharis Janssen developed first microscope in Holland in 1595. सो ज़ेचारिस जैनसन जो है ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्होंने डेवलप किया था हॉलैंड में 1595 में. The microscope developed by Zecharis Janssen was simply a long tube with lens at each end. The microscope developed by Zecharis Janssen was simply a long tube with lens at both end. सो माइक्रोस्कोप जो कि ज़ेचारिस जैनसन ने यूज़ किया था वो एक लॉन्ग ट्यूब थी, जस्ट एक लॉन्ग ट्यूब थी जिसके बोथ एंड पे लेंसेज प्रेजेंट थे. ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप था जो कि डेवलप किया गया था. द माइक्रोस्कोप फर्स्ट डेवलप्ड बाय ज़ेचारिस जैनसन इन हॉलैंड इन 1595. सो it was simply a long tube with lens at both ends. The use of microscope is called microscopy. The magnification of this microscope, which was developed by Zecharis Janssen, its magnification range from 3x to 9x. Now what is magnification? मैग्नीफिकेशन का मतलब है अपेरेंट साइज़ को इनलार्ज करना, मीन्स इमेज को इनलार्ज करना, बट नॉट इनलार्जिंग इट्स एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्ट इनलार्जिंग द इमेज और अपेरेंट साइज of the object.
So magnification mean enlarging the apparent size or image of object. Right, so what is magnification? Enlarging the apparent size or image of object, but not the actual size, right? So the magnification of the microscope used by Zacharias Janssen is 3x to 9x. 9x means it enlarged the image up to 3 to 9 times. And what is x? It is the unit of magnification, and it is expressed in diameter. मैग्निफिकेशन क्या है? अपेरेंट साइज ऑफ इमेज को इनलार्ज करना या इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करना, बट नॉट इनलार्जिंग इट्स एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? सो द माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय ज़ाचारियास जैनसन, it magnify the object up to 3 to 9 times. What is x now? It is the unit which is expressed in diameter. So Anton van Leeuwenhoek, it is a Dutch scientist. It is an early German spoken language which was spoken by earlier people, right? So it was a first microscopist. Anton van Leeuwenhoek, it was a first microscopist because it examined the bacteria in a drop of water, right? इनको फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट क्यों कहा जाता है? इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था या स्टडी किया था इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, राइट? सो ही डिस्क्राइब बैक्टीरिया इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट माइक्रोस्कोपिस्ट. ही स्टडी और एग्जामिन bacteria in drop of water. So जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो बनाया गया था वो ज़ाचारियास जैनसन ने 1595 में बनाया गया था. इट वॉज सिंपली अ लॉन्ग ट्यूब विद लेंसेज एट बोथ एंड इट्स मैग्निफिकेशन इज़ 3 to 9 times. X is unit and it is expressed in diameter. So the second scientist was Anton van Leeuwenhoek. It is also called as first microscopist. Why? Because it studied bacteria in a drop of water. And the microscope used by Anton van Leeuwenhoek, its magnification power is 250 times, right? X is a unit and it is expressed in diameter, right? So the microscope used by Anton van Leeuwenhoek, it magnify image up to 250 times, right? Then actual size of the image. So what is resolution or resolving power? So what is resolution? It means the ability of microscope to show two objects clearly. Means कि ये ability है माइक्रोस्कोप की कि वो टू ऑब्जेक्ट को या टू पॉइंट्स को क्लियरली इनेबल करे और क्लियरली विजुअलाइज कर सके. Resolution also means clarity of an image. Resolution of human eye is 0.1 millimeter, right? So resolution means the ability of microscope to show two object clearly. यानी कि ये माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है जिसके थ्रू हमें टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियरली विजुअलाइज हो सकते हैं. Resolution of human eye is resolution of human eye is 0.1 millimeter.
सो ह्यूमन आई की जो रिजोल्यूशन है वो 0.1 मिलीमीटर है. So if objective lens clearly differentiate the distance between 2 points of an object, so we can say that the microscope have high resolving power. मीन्स के रिजोल्यूशन का जो काम है वो ऑब्जेक्टिव लेंस का होता है. अगर ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर देता है किसी भी 2 पॉइंट्स में या फिर किसी 2 ऑब्जेक्ट में, उसे क्लियरली विजुअलाइज कर सकता है, सो वी कैन से दैट दिस माइक्रोस्कोप हैव हाई रिजॉल्विंग पावर. सो ऑब्जेक्टिव लेंस clearly differentiate between 2 points, so we can say that microscope have high resolving power, RP resolving power. सो रिज़ोल्यूशन जो है वो तब इंक्रीज़ होगी अगर ऑब्जेक्टिव लेंस क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर देता है 2 पॉइंट्स में. सो वी कैन से दिस माइक्रोस्कोप हैव हाई रिजोल्यूशन पावर और हाई रिजॉल्विंग पावर. सो द रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप resolution power is 0.5 nanometer, and the resolution of electron microscope, and this is light microscope, so the resolution of electron microscope is 250 nanometer, and the resolution of human eye is 0.1 millimeter, right? ह्यूमन आई की रिजोल्यूशन पावर कितनी है? 0.1 मिलीमीटर है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 0.5 नैनोमीटर एंड लाइट माइक्रोस्कोप की 250 नैनोमीटर. So this is all about microscope, magnification power and its resolution. Up to that, thanks for watching.